वेरी सॉरी फॉर दैट। सो कैट क्रैक की जब हम बात करते हैं, क्रैक कैट के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं समवन हु इज गेटिंग लेट्स से 60 percentile is also cracking cat, someone who is getting a 70 percentile is also cracking cat, and someone who is let's say cracking 90 percentile also is also cracking cat, and someone who is getting 99 percentile is also cracking cat. So cat crack karna to kuch bhi ho sakta hai. We are talking about cracking cat in the first attempt. That's the first thing which I want to answer, that what are my aspirations, what are my aspirations. And when I talk about aspiration, everyone will probably talk about IIM Ahmedabad, and not everyone. There are some students who even find it very difficult to answer that I want to go in IIM Ahmedabad because they know ho nahi payega, hamari himmat nahi hai. So good. That is something also which is very good. First of all, there is an aspiration. There are dream colleges, and then we have to match those dream colleges and aspiration with reality. What I am good at, what I am bad at, what I have done so far. Is my profile is matching those IIMs, right? What exactly do you mean by profile? What exactly do you mean by profile building? So you have to match your aspiration and reality, and then let's see whether I'm cracking cat or not. Right? There'll be some students who probably might be happy with Nasimuji or a symbiosis. There'll be some student who know my profile is very good and I can crack, let's say I get a call from IIM Ahmedabad, or for that matter, top IIMs, or I have a certain work experience and my work experience will become handy in cracking those IIMs. So my aspiration and reality should match, and then I'll be talking about cracking the percentile. And for me, cracking cat is, अगर आप जिस चीज के लिए अच्छे हैं, अगर आप वैसे कॉलेजेस तक जा पा रहे हैं, या फिर अगर आप ऐसे कॉलेजेस के अंदर जा पा रहे हैं जिसका आरओआई बहुत अच्छा है, जहां पर you will certainly find the difference between who you are and what you will be after 2 years, wherein you are confident that any companies can take you, or you are apt to work in the industry. If that is thing which you are looking at, for me, that is something we are talking about, where we are talking about cracking cat. So that's what you need to talk about, and that's what, according to me, when I'm talking about cracking cat is all about. Now, when I'm talking about all these colleges, aspiration, dream college and all, I want to divide it in few clusters, right? So this is what I mean by cracking cat, right? For example, हमारे पास सबसे important चीज होता है, we run behind the packages, right? I'll talk about profile building also. Priya, please rename yourself if possible, so that I should know who is asking what question, right? Krishna Dubey, I'm not getting your question exactly. I'm confused between which YouTube channel to preparation, right? I'm not getting your query exactly, Krishna. So please share your query again, and at the end of the session, I'll do that. Don't worry at all. So when I'm talking about the cluster-wise colleges, right? What exactly is cracking cat? हम लोग बोलते हैं IIMs में जाने के लिए प्रोफाइल चाहिए. हम लोग बोलते हैं IIMs में जाने के लिए प्रोफाइल चाहिए. आपके 10th के मार्क्स देखे जाते हैं, आपके 12th के मार्क्स देखे जाते हैं, आपका ग्रेजुएशन का स्कोर देखा जाता है, आपका जेंडर डाइवर्सिटी देखा जाता है, आपका वर्क एक्सपीरियंस देखा जाता है, राइट? एंड वी गो ऑन ऑल दीज काइंड ऑफ वेबसाइट्स, all these kind of YouTube channels, and we take information as and when it is coming. We don't go to websites. Quickly in the chat box, all students who are preparing, who are attending this session, how many of you actually went on individual website to search out कि जो मेरे को कोरा पे बोला जा रहा है वो सही है भी सही या नहीं? Quickly in the chat box, कितने लोग individually सारे IIMs की वेबसाइट पे गए हैं? Quickly in the chat box, कितने लोग actually IIM की वेबसाइट पे गए हैं? हर IIM की वेबसाइट पे, every IIM website, Ujjwal, every IIM's website, each and every IIM's website, how many of you, right? I think hardly one or two students are there who went on to all the IIMs, and we talk about it, right? Even probably I won't have been gone in detail into all the IIM's website. So when I'm talking about profile, yes, it matters. Yes, it matters. I'm not denying the fact it won't matter. But apart from the top IIMs, there are no colleges who will get into these kind of a profile. So हम लोग क्या profile building से जो समझते हैं, we get into a different kind of a thing. As per profile we are talking about. So IIM Ahmedabad देखता है आपका let's say diversity factor क्या है, आपका gender क्या है, आपने किस में graduation किया है, आपने for that matter आपने
आपका 10th के अंदर स्कोर क्या है, 12th के अंदर स्कोर क्या है, all these things they will see, right? So this is what the profile we are talking about as of now. And apart from the top 5 IIMs, other IIMs, they don't get into this, not other colleges as well. Now when I'm talking about all those things, if you see, so let's talk about the salary packages. हम लोग IIM करते रहते हैं, और there are other colleges जो शायद 100% focus जो है वो सिर्फ किस पे करते हैं, your CAT score. This is the only thing which is there in your control, so please do that. Please take care of this rather than worrying much about other things. IIM Kolkata, the fees of 19 lakhs, average salary. I'm talking only about average salary. IIM Ahmedabad, fees and average salary. This is slightly increased now. IIM Bangalore, fees and average salary. SP Jain, fees and average salary. So if you talk about cluster 1 के अंदर आपके पास 3 कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि नॉन आईएम इंस्टीट्यूशंस हैं, एंड ये जो नॉन आईएम इंस्टीट्यूशंस हैं ये 100% जो है आपके कैट स्कोर पर एडमिशन देते हैं. सो व्हाई यू आर मोर कंसर्न विद दिस? आप क्यों इतना कंसर्न है इन चीजों के लिए when you have other things to take care of, right? Let's move further. Cluster 2. When I'm talking about cluster 2 colleges, if let's say talk about IIM Indore and Kozhikode, right? So Indore के अंदर definitely जिनका एकेडमिक्स अच्छा नहीं है यहां पर शायद ऑप्ट करने का मतलब ही नहीं है, बिकॉज 65% ऑफ द वेटेज इज एकेडमिक्स. IIM Indore 65% of the weightage is on a CAT score की मतलब ही नहीं रह जाता है. So IIM Indore, yes, it is difficult, but what about other colleges, right? What about someone who is an engineer and talking about MBA? IIT Bombay, best thing for option for the engineer. NITI Mumbai, best option for an engineer with the average package of 70-20 lakhs. But the idea is I'm just giving you my explanation of cracking CAT. And I'm not saying don't hunt for 99. The only thing which I'm saying is stop worrying about all these things. Mera ye nahi ho raha, mera profile nahi ho raha, mujhe call aayega, mujhe nahi aayega. The only thing which you should matter is this. The only thing which you should matter is my ROI. The only thing which it should matter is I should see what exactly things we are talking about, right? Someone was talking about agri. Does SP Jain accept NMAT score? No, Sijal, they accept that this thing CAT score only. So someone was talking about agri-business ke liye. So when I'm talking about agri-business, yes, it's close to around 80-85 percentile also you get the agri-business thing, but their placement doesn't, उनके जो placement होते हैं, it doesn't happen with the, you know, the flagship PGP program. Their placement and all वो सब others अलग से होते हैं, and their placements are also not that great. But yes, you get IIM Tech, that's a different thing altogether. Now, Krishna Dubey, when you're talking about 778, you're talking about what CGP or what exactly you're talking about? Please mention it aptly so that I can explain it further. So these are cluster 2 colleges. These are cluster 2 colleges. When I'm talking about, yes, you can get, I am not sure, Krishna, but yes, it depends on the CAT percentile as well. There are chances you get a call, but again, there are other factors will also matter. And 12 and graduation. Okay, you're talking about 7. It's difficult, to be very honest with you, Krishna. It's difficult. It's difficult. I'm not saying it's impossible. It's difficult. Again, it depends on you hit that 99.9 percentile bracket and probably you can get a call. So when I'm talking about cluster 4 colleges, this is where I'm talking about cluster 4 colleges. So this is something which you need to remember. Right? So मेरे लिए, according to me, this is what is cracking CAT all about. So don't do all these things. And the moment you go down the cluster, अगर आप देखोगे फीस बढ़ना शुरू हो जाएगी और आपका प्लेसमेंट कम होना शुरू हो जाएगा. फीस बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपका प्लेसमेंट कम होना शुरू हो जाएगा. That's what it's all about. So Mahir is talking about, please tell the right guidance to crack the CAT without any coaching. Mahir, I'll be talking about it. Just hold on for a while. That's what this thing is all about. When I'm talking about score versus percentile in CAT as an examination, अगर मैं score versus percentile की बात करूं, let's talk about 18 and 19. Because the paper pattern was the same. If let's say I'm talking about verbal ability and reading comprehension, logical reasoning, data interpretation, and let's say I'm talking about quantitative aptitude. These are the 3 sections I'm talking about. Roughly, if I talk about to hit that 90 percentile thing, to hit that, let's divide it into 90 percentile, 95 percentile, and 99 percentile, right? So to hit that 90 percentile, then in verbal ability and reading comprehension, all I'm looking at roughly 10 odd questions, 10 net questions in, let's say, all three sections. That's what I'm looking at to get 90 percentile. To get 90 percentile, all I'm looking at is 10 questions each out of 100 questions. If let's say I want to hit that 95 percentile, I am talking about roughly close to around
12 questions each section, and we are talking about hitting 95 percentile. And when we are talking about hitting 99 percentile, all I'm looking at is 15 questions each to hit that 99 percentile thing. So why I'm telling you all these things, because you should know, because मेरे को जब mocks देने हैं, मेरे को जब preparation करनी है, मुझे जब study planner बनाना है, this is what I have to look at: 10, 12 and 15. And guys, believe me, last 4 years it was not an exception. Last 4 years it was not an exception at all. 10 questions, 90, 95, 99. This is the thing which I'm looking forward for CAT exam. So for that matter, if let's say I'm talking about roughly to get a 90 percentile, all I'm looking in verbal ability is a score of close to around 33 to 35 odd marks. When I'm talking about to hit 95 percentile, I'm looking a score of close to around 36 to 40 odd marks. And when I'm talking about verbal ability in let's say 99 percentile, all I'm looking at close to around 50 odd marks. This is what I'm looking at as far as 90, 95 or 99 percentile is concerned, right? So I have good score in 10th and 8.8 CGPA in college, but 76 in 12. Will it be a problem? Yes, Behla, but point is there are chances you can get a call for sure. Yes, you can get a call for sure. But again, the other things will also matter. What kind of graduation you are pursuing, all those things will also, you need to tell me so that we can guide you accordingly. So this is what you need to look at as far as, you know, score versus percentile is concerned, कि मेरे को चाहिए क्या यार, मेरे लिए क्रैक परसेंटाइल के अंदर 10 भी है और 12 भी है, 15 भी है. अब पॉइंट इज, हम लोग सोचते हैं हम सारा पेपर अटेम्प्ट कर लें, ऐसा नहीं हो पाएगा. सो व्हेन यू आर गिविंग मॉक्स, आई विल टॉक अबाउट दैट. महीर तुम्हारा आंसर भी यहां पर आ जाएगा. यू कैन स्टार्ट विद प्रोबेबली मार्किंग 8 क्वेश्चंस. हम लोग मॉक नहीं देते. आई हैव सीन स्टूडेंट्स, मैं मॉक कब दूंगा जब मेरी प्रिपरेशन 100% हो जाएगी. मैं मॉक कब दूंगा जब सर एटलीस्ट मैंने 90% कोर्स खुद रिवाइज कर लिया होगा. बिलीव मी, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज रिवीजन इन एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन. देयर इज नथिंग कॉल्ड एज रिवीजन इन एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन. जो लॉजिक आता है, इट इज कॉल्ड एज प्रैक्टिस, नॉट रिवीजन, राइट? सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मॉक्स, आपने एटलीस्ट जब आप पहला मॉक देंगे, आपका चाहे 50% प्रिपरेशन हो चुका होगा, आई एम श्योर कि आप 8 क्वेश्चन तो करके आ सकते हैं. तो करो ना यार. मॉक्स ना देना इज नॉट अ सॉल्यूशन, बिकॉज आप सिर्फ अपने आप से दूर भाग रहे हैं, नथिंग एल्स, राइट? सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्शन वाइज स्कोर एंड परसेंटाइल, अगर मैं सेक्शन वाइज की बात करता हूं, so let me talk about verbal ability. Let me talk about verbal ability कि मेरे पास क्या क्या चीजें होंगी. सो वर्बल एबिलिटी के अंदर मैं बात करूं, हालांकि इसके अंदर और डिटेल के अंदर मैं और जाऊंगा आगे जाके. सो वर्बल एबिलिटी के अंदर अगर मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट लेट्स से प्री कोविड टाइम्स 34 क्वेश्चंस पेपर. 34 क्वेश्चंस के अंदर आई एम टॉकिंग अबाउट 24 क्वेश्चंस इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, and let's say I'm talking about 10 questions in verbal ability, wherein the para jumbles, the odd sentence para jumbles will come into picture. Now अगर मुझे वो 8 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं, तो अकॉर्डिंग टू यू इन द चैट बॉक्स मुझे क्या इंप्रोवाइज करने की जरूरत है? इन द चैट बॉक्स मुझे क्या इंप्रोवाइज करने की जरूरत है? क्विकली इन द चैट बॉक्स. अगर मुझे वो 8 क्वेश्चंस या मुझे वो 10 क्वेश्चन या मुझे वो 12 क्वेश्चन क्रैक करने हैं, what is the exact thing which I need to improvise? Yes, right, very good. So the only thing which I have to, Sejal, more than that, the only thing which I have to focus on is reading comprehension. And believe me, every time when I talk to students, majority of them पैराजम्बस नहीं हो रहे. अरे यार, तुम्हारे कोई 8, 10, 12 क्वेश्चंस तो आरसी से आ जाएंगे, राइट? इसमें फोकस करो ना यार. और वहां पर पैरा समरी 1-2 क्वेश्चन सही हो जाएगा तो भी तुम 95, 99%, 95 पे तो हिट कर जाओगे. हाँ, 99 परसेंटाइल के लिए, 99 परसेंटाइल के लिए वहां तुम्हें पैरा जंबल्स वगैरह सब कुछ के अंदर जाना है, बिकॉज तुम्हारे को 5 एक क्वेश्चन वहां पर सही करने पड़ेंगे. बट पूरा टाइम, पूरा 1 साल तुम पैरा जंबल्स के ऊपर टेंशन लेके बैठे हो, और जबकि तुम्हारा पूरा जो क्वेश्चन है वो आरसी पे बैठा हुआ, राइट? सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट चूजिंग दैट 15 क्वेश्चंस, एंड आई एम टेलिंग यू, बिलीव मी, आप कभी भी देख लेना, पुराने एल्यूमिनाई से बात कर लेना, जहां भी आप पढ़ते हैं वहां बात कर लेना, 15 क्वेश्चन में से कम आपको 12 क्वेश्चन आरसी से निकालने पड़ेंगे टू हिट योर डिजायर्ड परसेंटाइल. माहिर, you can discuss with me separately. I'll give you my number at the last. You can discuss with me separately. We can do one-to-one session with you. No, not at all a problem. Just hang on for a while, right? So guys, is it clear? Shall we move ahead? समझ में आ रहा है, or should I stop? Guys, समझ में आ रहा है? Are you guys getting it? Quickly in the chat box, yes or no? Because this is something which is very important for you. So when I'm talking about verbal ability and reading comprehension, all I'm talking about is focus on RC, focus on reading. And when I'm talking about reading, focus on diverse genre. I'll talk about this as well, right? Okay.
सो पहली प्रॉब्लम मैंने बताया, वर्बल एबिलिटी के अंदर स्टूडेंट्स बोलते हैं पैरा जंबल्स नहीं आ रहे, और उसके अंदर भी अगर कुछ इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स पूरा टाइम सिर्फ एक ही चीज बोलते रहते हैं, क्या? अंग्रेजी नहीं आ रही, अंग्रेजी नहीं आ रही, अंग्रेजी नहीं आ रही, वर्बल एबिलिटी नहीं आ रही, वर्बल एबिलिटी नहीं आ रही। गाइस, अगर वर्बल एबिलिटी नहीं आ रही तो प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस हम लोग पूरा साल क्या कर रहे हैं? मैथमेटिक्स। आई गिव यू एन एग्जांपल। सो देयर आर टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट कैटेगराइजिंग देम इनटू टू पार्ट्स, engineers and non-engineers, right? Engineers and non-engineers. Problematic area. My first thing to them is problematic area. For engineers, verbal ability. For non-engineers, what is this? Quantitative aptitude, or for that matter, LRD, right? That's a problematic area. Okay. Strength. Strength kya hai? Quants or logical reasoning, data interpretation. Strength kya hai? Verbal ability. Right? That's I'm talking about dividing the students in two different categories. Now let's see how they prepare. Let's see how they prepare. Engineer student, right? When he's coming, let's say in the month of June. Just a minute, guys. Very sorry for this. Let's say they are coming in the month of June. ठीक है? जून के अंदर ये बंदा आ रहा है, और let's say they are coming in the month of January. जनवरी के अंदर इंजीनियर क्राउड आ रहा है, और जनवरी के अंदर their concern is verbal. ठीक है? नवंबर के अंदर their concern is verbal. And what you have done between Jan to June or Jan to November, what have you done? Between Jan to November, the only thing which I have done is quantitative aptitude and logical reasoning data. Right? Non-engineering student. What is your concern? My concern is quants. My concern is quant in January. November, mein, what is your concern? My concern is quants. What you have done between Jan to November, what I have done is verbal. Guys, please hang on. Right? And verbal is the only section wherein you can maximize your score. So this is something which you need to improve, all engineers and non-engineers out there. And believe me, this is something wherein you have to score the marks. यहीं पर आप अपने मार्क्स मैक्सिमाइज कर सकते हो. दैट इज द ओनली ऑप्शन. सो स्टार्ट रीडिंग. माय फर्स्ट पॉइंट इज आई विल टॉक अबाउट दैट एज वेल. नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, राइट, फॉर इंजीनियर्स एंड नॉन इंजीनियर्स, मैं सबके लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बता रहा हूं. अपने हिसाब से 21, 22, 23 जो भी तुम्हें करना है उस हिसाब से डिवाइड कर लेना. यहां मैं बता रहा हूं, रीडिंग की बातें कर रहा हूं. रीडिंग आपको करना चाहिए इंटरनेशनल सोर्सेज से. व्हाट आर दोज इंटरनेशनल सोर्सेज? From where CAT is taking the passages. For more details, when I go to my live sessions, you can get in touch with me on live sessions. I'll talk about that because we don't have time at this point of time. So RC की रीडिंग इंटरनेशनल सोर्सेज से. मुझे नॉवेल्स पढ़ने हैं. नॉवेल्स कहां से पढ़ने हैं? बिगिनर्स के लिए कौन से नॉवेल्स होने चाहिए? फॉर दैट मैटर मॉडरेट रीडर्स के लिए क्या होना चाहिए, और एक्सपर्ट लोगों के लिए क्या होना चाहिए? हु शुड रीड आयन राइंड, और हु शुड रीड फॉर दैट मैटर अरुंधति रॉय, और हु शुड रीड चेतन भगत फॉर दैट मैटर, और रमेश त्रिपाठी. हु शुड रीड मिंट, हु शुड read Hindu. We'll talk about this, all those things, when we'll get into my live classes. So this is something which you need to remember. Quantitative aptitude, 90% of your questions are coming from arithmetic, algebra and geometry. These are the three sections from where your basically quantitative aptitude section comes, right? What I am doing, I am more concerned with, मुझे probability करा दो, मुझे permutation करा दो, मुझे let's say mensuration करा दो, मुझे higher mathematics करा दो. Why? राइट right? जो चीज तुम्हारे बस में है पहले वो कर लो. सो 90% पेपर तुम्हारा यहां पर है. सो दिस इज वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट दैट यू शुड प्लान योर स्ट्रेटेजी. दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू रिमेंबर. नाउ व्हाट एंड हाउ टू स्टडी, जिस पे मैं आ रहा था. फर्स्ट ऑफ ऑल, गो थ्रू द पेपर पैटर्न ऑफ एग्जाम्स. राइट? देखो पेपर पैटर्न के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि मेरे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, इफ यू सी द पैटर्न, आपको इकोनॉमिक्स के ऊपर एक पैसेज जरूर मिलेगा, आपको सोशियोलॉजी के ऊपर एक पैसेज जरूर मिलेगा, आपको बिजनेस के ऊपर एक जरूर मिलेगा, आपको एनवायरमेंटल साइंस के ऊपर पैसेज जरूर मिलेगा. ये सारे पैसेजेस आपको जरूर मिलेंगे ही मिलेंगे. यू टेक लास्ट 4 years के पैसेजेस एंड टेल मी दैट वेदर आई एम रॉन्ग और. If I'm talking about quantitative aptitude, you will find out of 34 questions, close to around 25 to 27 questions every year from arithmetic, from algebra, from geometry. You will find 1 to 3 questions on modern mathematics, which is probability and permutation and combination. So guys, see the kind of questions you are getting, yaar.
rather than worry, and accordingly make your study planner. And if you are not aware about the paper of pattern of examination, boom, you are gone, right? कितनी भी प्रिपरेशन कर लो, गो थ्रू द डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस। और कोई मेरे से अभी पूछ रहा था कि मैं कहीं भी चले जाओ, ढूंढो, ऑनलाइन मिल जाएगा, कहीं पर भी, ई कोचिंग पे भी मिल जाएगा। सो व्हेन समवन मेरे से पूछ रहा था मुझे क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, एंड दैट्स वेयर आई ऑलवेज से, रैंडमली यूट्यूब से अगर पढ़ लेना होता, अगर रैंडमली यूट्यूब से पढ़ लेना होता तो सब कुछ हो जाता। गाइस एक बात समझने की कोशिश करो, मैं ये नहीं बोलता हूं कोचिंग ज्वाइन कर लो, और मैं ये भी नहीं बोलता हूं कि यूट्यूब पे बिल्कुल विश्वास कर लो, बिकॉज द पॉइंट इज, आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया, उस पर तुमने लगा दिए 10 घंटे। मेरे पास क्वेश्चन आते हैं 2, मैं एक नॉन इंजीनियर स्टूडेंट हूं, मेरा परसेंटेज हिला हुआ है, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस हिला हुआ है, मेरा एवरेज हिला हुआ है, मेरा पार्टनरशिप हिला हुआ है, जहां पर 90% पेपर है वो मैं कर नहीं रहा हूं, और आखिरी के 100 दिन बच गया, मैं 10 दिन इस पे लगा दिया। मैं पढ़ना शुरू कर दिया टाइम्स ऑफ इंडिया। मैं कई बार स्टूडेंट से पूछता हूं, मैं पढ़ रहा हूं इन शॉर्ट से न्यूज, अरे क्या करोगे उसके पढ़ने से? मैंने हिंदू शुरू कर दिया। इससे पहले कभी पढ़ा है? नहीं मैंने सर कभी पढ़ा तो नहीं, बट किसी ने बोला हिंदू अच्छा न्यूज़पेपर है, वहां से पढ़ो। गाइस यू नीड मेंटर्स, यू नीड मेंटर्स। रैंडमली किसी भी वीडियो पे जाके 8-8 घंटे नहीं लगा सकते, बिकॉज वो वीडियो हर चीज के लिए बने हैं, राइट? सो यू शुड नो अबाउट कि मेरे ABC लेवल क्वेश्चंस क्या है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, and this is where it will help you to make a clear study planner. And that's what I said, you can crack CAT in first attempt, knowingly that you are going in the right direction. And when I'm talking about direction, these are the things you should need to look at. मुझे कितने क्वेश्चंस करने हैं, मुझे कितने मॉक्स करने हैं, मुझे मॉक्स को स्टार्ट कब करना है, मुझे आरसी के सोर्सेज कहां से पढ़ने हैं, मुझे रीडिंग कहां से करना है। अगर आपको ये नहीं पता है, बिलीव मी, कैट कोई ऐसे नहीं हो जाएगा, आपको इस डायरेक्शंस में जाना पड़ेगा, राइट? अपने आप से क्वेश्चन पूछो, अपने आप से क्वेश्चन पूछो। सर मैं रोज पूछता हूं, ते बेटा तेरा क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूं। अपने आप से क्वेश्चन पूछो, कितने पेपर तुमने सॉल्व किए हैं पास्ट ईयर में। अपने आप से क्वेश्चन पूछो, मैंने कितना मटेरियल सॉल्व किया है। अपने आप से क्वेश्चन पूछो, मैंने क्या मेरा प्लान ऑफ एक्शन बनाया। अगर यहाँ पर जो भी लोग कैट 22 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप पूरे साल का प्लान ऑफ एक्शन छोड़ो, मैं गारंटी दे सकता हूं नेक्स्ट 3 महीने का प्लान ऑफ एक्शन नहीं होगा। जो लोग कैट 21 दे रहे हैं, उनका क्या 100 डेज का प्लान ऑफ एक्शन रेडी है? अगर नहीं है तो कैट नहीं होगा। एरियाज टू टेक केयर ऑफ इन ऑल द सेक्शन, मेरे को ऑल जो मैं बता रहा था, आरसी में क्या करना है, एलआर में क्या करना है, और हाउ डिफरेंट आर ऑल एग्जाम्स, बाकी के एग्जाम क्या डिफरेंट है, मेरा प्लान ए, मेरा प्लान बी, मेरा प्लान सी क्या है। इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, देयर इज अ प्रॉब्लम। हो पाएगा प्रिया, प्रिया एक तो अपने नाम चेंज कर लो, हो पाएगा, स्टार्ट कर सकते हो। गेट इन टच विद मी, आई विल टॉक अबाउट दिस, और अगर कन्विंसिंग लगे तो स्टार्ट कर देना, बिकॉज एनीवेज आई विल बी स्टार्टिंग लाइव क्लासेस फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। मैं कैट 21 के लिए लाइव क्लासेस मंडे ऑनवर्ड से स्टार्ट करने वाला हूं। देयर विल बी अ स्पेसिफिक बैच, क्रैश बैच व्हिच विल स्टार्ट। पहले 2 हफ्ते वो 3 दिन रहेगा, उसके बाद डेली बेसिस पे शायद 3-3 घंटे भी करना पड़े, बिकॉज हमारे को कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वर्बल एबिलिटी के अंदर 16 से लेकर 20 तक नो चेंज, कोई चेंज नहीं है। देख लो फटाफट इसको, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर, राइट? अगला हम लोग अगर बात करते हैं, मेरे पास जो मैं आरसी के जॉनर्स की बात कर रहा था, विट काइंड ऑफ जॉनरे व्हिच बेसिकली कैट के अंदर टॉपिक्स आते हैं। दीज आर ऑल द जॉनर्स फ्रॉम वेयर यू गेट द टॉपिक्स फ्रॉम कैट। सो यू हैव इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, आर्ट्स, लिटरेचर, बायोलॉजी, यहां से आएगा। मुझे ये पढ़ना है सर, मी 2000 कर रहा हूं, सो कैन यू गिव मी अ प्रॉपर गाइडेंस? यस Mahir, I'll give you dear, I'll share my number Mahir, don't worry at all, I'll share my number. And Priya who is asking me this cat 21 wala question, please give me your name, what exactly your name is all about, and accordingly you can get in touch with me so that I should know. You can ping me on my WhatsApp number and I will help you out, don't worry at all, right? क्वांटिटेटिव एबिलिटी जो मैं बात कर रहा था, सो हियर वी गो, दैट्स वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट। बस इतना ही करना है हमारे को, ज्यादा नहीं करना। और मैं कह रहा हूं ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, इसमें नहीं आना। मुझे सिर्फ ये पहले 4 यूनिट के ऊपर फोकस करना है। That's what I need to do. Okay, Patel Manisha, you can get in touch with me. I'll share my number, ping me, or you can share with me your number as well. I can give you to the team, right? Because I don't this thing, or they can arrange your one-to-one counseling with me, and I'll do that, no problem at all. मेरा कॉन्ट्स और DILR अच्छा है, but I'm not very keen on reading. How I can inculcate reading habits? So you should start with something which you love the most. You should start with reading which you love the most. That is what you need to do. So this is study planner sample, guys. This is study planner sample which I am saying. So अगर कोई अभी से पढ़ाई शुरू करता है, this is the kind of study planner which someone has to inculcate. Right? I'll give you my number, Manisha. Don't worry at all. I'll give you my number. So this is something which you need to understand, guys. अगर आपको कुछ अच्छी सी चीज करनी है तो, राइट? अगर आपको अच्छी तरीके से कैट का एग्जाम करना है। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू मॉक्स एंड मॉक एनालिसिस, राइट? हाउ इंपॉर्टेंट इज गिविंग द मॉक्स? आई विल गिव यू एन एग्जांपल. Today I was sitting with one of the students, right? My last year student.
and somehow he's not able to crack CAT. And now this year he's again preparing, and somehow not he's preparing with me because उसने already classes ले रखी हैं. All the only thing which you're discussing is mock. And the idea was last year, उसी के batch में he got close to around 59 percentile, right? And उसी के batch के 59 percentile, I'm talking about roughly 10 to 12 odd marks. You will get a 59 percentile. उसी के batch में someone is sitting in IM, right, with close to around 97 percentile. And I don't remember which IMs, but profile decent वगैरह था. So 97 percentile पे बैठा है. 97 percentile के अंदर typically I'm talking about close to around 130 odd marks, right? So same batch, right? They used to study regularly, साथ में पढ़ते थे, सब कुछ करते थे. Now the point is, when I'm talking on mocks, this guy, when I was going for a D-day and I was discussing 35 mocks, 3 mocks, right? And logic ऐसा नहीं, पढ़ना नहीं चाहता था. क्यों नहीं दिए? करूंगा, preparation हो जाए, करूंगा. Confidence नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा? So this is what you have to work. Holkar, Mukta, please, you can just ping me personally. I'll talk about it. I can't, well, I'm a teacher, so I can get you connected with my team and they will help you out, dear. So sorry for that. So you can share your number and I will give your number to the team. So this is the difference. So when I'm talking about mocks, now why mock and why mock analysis, right? So when I'm talking about mocks, जब मैं अगर mocks की बात करता हूं, मैंने 3 घंटे का mock दे दिया, that is okay. But I should take at least 6 hours for mock analysis. That is something which is very important. Now understand. Thank you, Swapnil. I'll get in touch. Not I will ask my team. They will get in touch with you. So when I'm talking about, okay, Parv, you can share your number. I'll ask my team. They will get in touch with you, Parv. Right? Just a minute for few years. I'll give you my number as well. So now जिस बंदे ने 35 mocks दिया है, जिसने अगर मान लो 35 mocks दिया है, now 35 mock into I'm talking about roughly 9 hours. Let's take 10 hours. लगभग 350 घंटे उसने मॉक और मॉक एनालिसिस में डाला है. अब स्टूडेंट का पहली चीज होता है, यस कृष्णा, आई टॉक अबाउट इट. स्टूडेंट का पहला चीज होता है, मैं मॉक एनालिसिस कैसे करूं. आपको पूरा पेपर वापस सॉल्व करना है. आप ये समझ लीजिए कैसे. द क्वेश्चंस व्हिच वेंट करेक्ट, right? Don't just go to the solution and match whether your logic and their logic is same or not. Second, the questions which you have attempted, how much time you have given there. When you are talking about time, वो time इतना worth देना था या नहीं था. What was the opportunity cost? मैंने वहां पर इतना टाइम देने से कहां पर ज्यादा छोड़ दिया. There will be easy questions और मैंने easy question शायद छोड़ दिए. तो कम से कम तुम्हें 1 घंटा तो वो करेक्ट क्वेश्चन देखने में लगेगा. उसके बाद मैं देखूंगा इनकरेक्ट क्वेश्चंस. इनकरेक्ट क्वेश्चन स्टूडेंट कैसे देखते हैं मैं बताऊं. मेरे क्वेश्चन मान लो 25 इनकरेक्ट हो गए, मैं जाता हूं सीधा मॉक के सॉल्यूशन पे. ओहो, इसमें ये करना था, अच्छा अब ध्यान रखूंगा. इसमें ये ध्यान करना था मुझे, अब ध्यान रखूंगा. इसमें मुझे ये करना था, मैं अब ध्यान रखूंगा. ऐसे मॉक का एनालिसिस नहीं होता. यहां पर तुमने पहले टाइम के साथ दिया था, अब तुम विदाउट एनी टाइम लिमिट इनकरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करो. बिलीव मी, देखना कम से कम 30 से 40% क्वेश्चन सही हो जाएंगे. एंड दैट्स वेयर यू आर डूइंग जस्टिस टू मॉक एनालिसिस. तब भी अगर गलत हो रहे हैं, तब जाके सॉल्यूशन पे जाओ, फैकल्टी को पकड़ो, फैकल्टी से पूछो. राइट? टिल दैट टाइम डोंट गो टू द सॉल्यूशन. एंड व्हेन लास्ट यू हैव नॉट अटेम्प्टेड, उसको वापस अटेम्प्ट करो. एंड बिलीव मी, यू विल रियलाइज कि आई हैव डन अ ब्लंडर सर. मैंने इजी क्वेश्चन छोड़ दिए जो मुझे नहीं छोड़ने चाहिए थे. मैंने फालतू क्वेश्चंस पे टाइम लगा दिया जो मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था. एंड दैट्स वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट एनालिसिस. एंड दैट इज द थिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो these are all the things which you need to understand while going for mock and mock analysis. What happened? Okay, just a minute guys. Okay, while going for mock and mock analysis, right? And this I have already shown. मैंने अभी already शायद तुम्हारे को बता दिया था. So this is what we are talking about. So this is where I am talking about. This is where I am talking about. According to me, this is cracking CAT examination, right? This is what my agenda for the day was all about, and where we can help. I have taken your number, guys. I'll give your number to my team. They will help you out, right? Where we can help. We have all these things recorded for you guys. We have all these things recorded in the recorded. Though I'm starting the live classes also, right? I'm starting the live classes from Tuesday onwards. There is a fresh batch starting for CAT 21, and there is a batch starting for CAT 22 as well. You can get in touch with them and they will help you out. And if you want only the recorded lectures, this is where the recorded lectures is all about, right? This is the last lecture where we can help. You have all the recorded lectures on our platform, and you can
take all the things from there. And the next thing which I'm talking about, you can go to www.ecoaching.com if you want to go and subscribe for the offline classes, right? अगर आपको offline classes in the sense, अगर आपको recorded sessions ही चाहिए, अगर आपको recorded sessions ही चाहिए, so recorded sessions are also available and recorded, thank you Sagar, thanks a lot. So recorded section जो है वो आपको अगर आपको चाहिए, that is at 300,000 odd rupees, and if you want additional this thing, you can use my code and get the recorded sessions. And recorded sessions के बावजूद भी अगर आपको live session की जरूरत है, the way I am doing today, this is how I interact with all the students when they get into the live classes, and there'll be other faculties as well. अगर आपको live classes चाहिए तो आप recorded plus live दोनों ले सकते हो at a very nominal rate, and if I'm not wrong, because I'm not into sales, it is somewhere around, I think, 10,000 rupees only, wherein you get live and recorded both the classes, right? You can get in touch with the team. And to conclude, my mantra to success is practice, practice, practice. Make a daily planner. No one can help you if you are not determined. And that's where I want to end the session. My name is Prashant. This is my number. My number is 9979848380. You can get in touch with me. You can ping me, and I'll ensure I'll get in touch with you. Probably I'll be in the classes, but I'll try to get in touch with you through my team. And you can save my number. I teach verbal ability and reading comprehension. I train students for group discussion, person interview, and all. So quickly, if you have any questions, please start asking the questions. And those who don't have any questions, love to hear your feedback. That I hope you have liked the session. A quick feedback in the chat box will really help me to improve further. So your feedback or your questions, please, you can start now. So what do you prefer if I want 99 above percentile CAT? If I start from now, so should I given it 20? Krishna, definitely go for 21. Definitely go for 21, because that expertise, that experience will help you further. हो गया, अच्छी बात है. मेरे को नहीं पता होगा या नहीं होगा, but definitely experience will help you further for sure. Yes, Ashi, mocks included. Yes, Vinayak, I've talked about kaha tha, read what you love, but not business and not page 3 or not Bollywood and all. Something which is, let's say, polity or something related to current affairs or something related to technology, Vinayak, right? Thank you, Swapnil. Thanks a lot for your lovely feedback, dear. Really appreciate. Sir, 2020 CAT exam ke lecture kab se shuru honge? Manisha, it is again starting next week. I'll ask the team; they will get in touch with you, or for sure. Trial matters or not? Yes, Krishna, it doesn't matter at all. It doesn't matter at all. कोई भी नहीं पूछने वाला. Don't worry at all, Krishna. Can I give CAT exam before having graduation degree? Palak, you can give the CAT exam for sure in your final year. You can definitely do that. You can get in touch with the team, Priya, and you can please share your number. And I'm not getting your name, dear. Please do that. GDP and how many months? How many days? Ashi, there will be a team who will get in touch with you. You can share your number, please. You can call me tomorrow. Or you can just ping me, and I will call you accordingly, Priya. Final year degree student is eligible. Yes, Harshita, they are eligible. Vinayak, my suggestion is go start with Indian Express for sure. Very good, Perp. Thanks a lot. Thank you for that feedback. I mean, my quant is not good. I haven't completed 40%, 10% of syllabus because I'm so Sejal, I have already talked about. I think last time we had a discussion. Ping me separately and we can discuss. Ping me separately and we can discuss. Okay. Sagar, you can save this, dear, separately, Sagar, because no one is there from the team. So 6 months to get Krishna. Exactly, that's what I'm saying. Difficult है, impossible नहीं है. Preparation plan करना है. तुम्हारा existing profile क्या है? मेरे से बात करोगे तो मैं शायद बात कर लूँगा. Sir, which book will be the best? There's nothing called as best, Aditi. You should practice the topics and search it out. You will get many books online as well. So I'm in BCom second year. What should I do to prepare if I'm doing this? So what should I do? Mahir, yes, I can guide you for sure. Get in touch with me. Not at all a problem. Maximum number of mocks, Krishna, there is no limit, but at least 30. Okay. Will the CAT be fully ready in 3 months? Yes, for sure. Okay. Thank you, guys. Thanks a lot. Thank you. Bye-bye, guys. Take care. Thanks a lot for listening to this session. I hope you have loved the session. I hope you have not wasted your time as well. Good night. And Ashi, get in touch with me, dear. I'll help you out for sure.
Good night and take care of yourselves, guys, and be in touch anywhere. Anyways, I have shared you my number. You can ping me on WhatsApp, and wherever you need my help, I'll be ready for help. And you can visit www.ecoaching.com. And here we go. As I said, you can access video lectures also on www.ecoaching.com. And the spelling of e-coaching is ecoaching, ecoaching.com. And you can, and there also there are many videos which are free of cost available. You can first of all watch those videos and then you can decide it accordingly. Sejal, ping me from your WhatsApp number and I'll get in touch with you for sure. Thank you, everyone. Thanks a lot. Bye bye. Take care. Bye bye, guys. Thank you.